पहले डबल डबल। got it, मुझे समझ आ गई है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब मैंने इसको गायब कर दिया, तो अभी मैं डबल नहीं नजर आऊंगा, अब एक ही दफा नजर आऊंगा। एग्री? जी ये अभी सिंगल नजर है। अच्छा जी, कैलकुलेटर निकालना बेटा। दिस इज फ्रॉम द एग्जामिनेशन एंड द एग्जामिनेशन इज 402 4 May June 2022। Aron, can you hear me? Yes, sir. Aron, can you please send the link, class link to Tayyiba, yaar, Tayyiba from our class, okay? Yes, sir. Page number, please. Beta, it's O levels past paper, not in my booklet right now. So PQ is a vertical pole. A rope is attached from the top of the pole P to a point on the ground R. Show that PTQ length, this length is 16.7. So I can see one thing, La Luna, that I have RQ and I have PR, so I can use Pythagoras theorem straight away. So 20 square is equals to 11 square plus PQ square. So 20 square minus 11 square is equals to PQ square. It means that PQ equals square root of 20 square minus 11 square. So what is the answer, which a PQ is equals to what? 279. 279, square root 279. And square root of 279 is? What is square root of 279? Assalamu alaikum. 16.703. 16.703. They want us to give the answer till 2 decimal places. So 16.70. So this is approximately equals to 16.70, and the result is shown. So I hope everybody you got the idea. Those who are in O levels, they can open their MS past papers or any past papers. You will see this question in your past paper booklet. Okay. Okay. So now the result is shown. Okay, look at part B. Part B say that a second rope is attached from point P to S. PQS is 90 degrees and RS is 30 meters. The angle of elevation of P from S. So, and what is angle of elevation? But the angle of elevation is like Z, okay? It's like a Z. ये Z की तरह होता है. तो यहाँ पे, for example, this is angle of elevation. This is angle of elevation. Alternate angles याद रहने चाहिए. And this is angle of depression. Angle of depression. Like for example, Vadan, जब हम अपने घर की बेल बजाते हैं, and if someone sees out and say, who's outside, agree? Yes sir. So we both look at each other with the same angle. Agree? Yes sir. With the same angle, we both look at each other. So that is what an angle of elevation is. Okay, now they say that the angle of elevation of P from S is the, what does it means? It means that of P from S, it means that at S, for example, I'm standing. So this angle is 36. This part is 36 only. This is 36 degree. So in the previous part, beta, we found that PQ is 16.7. So I'm going to write 16.7 here. Okay. Calculate angle RQS. So we are supposed to find out angle RQ and S. We are supposed to find out angle Q here. So beta, angle Q can be found if I have the third side of this triangle, which is QS. So I am finding QS first. Why? Sine एंगल हम लोग अगर फॉर एग्जांपल एंगल क्यू निकालना है, इट्स नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि वहां पे 90 नहीं बना हुआ. एग्री? सो पी क्यू एस जो है बेटा, ये 90 है, दिस इज 36, सो दिस इज 16.7. सो इफ आई फाइंड आउट साइन क्यू एस, सो क्यू एस इज द पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल विच इज लाइंग ऑन द फ्लोर, जो कि फ्लोर के ऊपर है. अंडरस्टूड? सो साइड Understood, sir. ऑपोजिट टू द side opposite to the angle is perpendicular, and this is base. So tangent theta will work for me. So tangent 36 is equals to perpendicular divided by base. Base is QS. So QS is equals to 16.7 divided with tangent 36. Ramin, what is the answer for this in the calculator? Can you please tell me? QS is equals to 16.7 divided by tangent 36. Tangent 36 पे divide कर दो. 22.9. 22.9 centimeters. Yeah, the result is in the, sorry, it's meters. Okay.
Now, Simon, the question is for 5 marks. Okay. So I'm gonna just take this working on this side. Okay. Now the examiner is asking me to find out angle RQS. So we know that everybody that RQS is a triangle which is not a right angle triangle because this is not 90 degrees is not drawn. Understood? So you can Yeah. see that So sir, QS page is number, I told it's all 20.9. levels, I don't know. What? 22.9. Okay. And RQ is 11. And this is 30. So that is, for example, we are going to find out this angle. So we know that Khushi that the side opposite to angle Q would be small q. This would be small r and this would be small s. So cosine rule will come into play. So I'm going to make cosine rule for small q. So q square is equals to s square plus r square minus 2 sr cos of q, cos of capital Q. Vadan, I'm going to find out cos q, so I'm going to make cos q the subject. So q square minus s square minus r square is equals to minus 2sr cos q. Minus 2sr will come here as a division. So I can write q square minus s square minus r square divided by minus 2sr equals cos q. So now Vadan, I don't need cos q, I need q. So q is equals to cos inverse of these values. Agree or not? So I'm going to put the values here now. Small q is what? Small q is 22.9 square minus s square is 11 square minus 30 square minus 2 into 11 into 30. So can anyone solve this question for me and tell me what is the answer and use this, put this value, these values in the calculator and tell me what is the final answer. 41.2. 41.2. 41.2. Sir, your voice is breaking. Okay, so that's still one decimal place, I hope. So this is 41.2. My voice is breaking for all of you or only Avinash? सर मेरे लिए सर भी थोड़ी ठीक देर है पहले हुई थी. एक्चुअली हो सकता है क्योंकि आज बारिश की वजह से ना इंटरनेट थोड़ा सा डाउन चल रहा था मेरा. आई डोंट नो, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट कि फैसिलिटी हो जाए. मैंने आज तो डबल कैमरा भी लगा दिए. सर ठीक है सर, ये सारे झूठ बोल यार ऐसे नहीं बोलते, क्लास के दौरान नहीं बोलते. क्लास का डेकोरम डिस्टर्ब नहीं करो करो मेरा, ठीक है? Sir, we are not jute bowling, sir. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है. आई डू ट्रस्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है. थोड़ा सा वेट करो यार, मैं घर वालों पे कर्फ्यू लगा के आता हूँ थोड़ा सा. होल्ड ऑन, तब तक ये नोट करो. All right, they're gonna hate me because I told everybody to switch off their mobile phones for some time. All right, सर so अभी done आवाज everybody? ठीक It's है. easy or not? Hadi, was this easy question? यस सर, एज कंपेयर टू द आईजीसीएसई सर ये बहुत इजी है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आईजीसीएसई डिफिकल्ट क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे तो तैयारी पूरी हो जाएगी. चलें जी, proceeding. Now they say that beta in this question, you can see that a third rope is attached to point P. We are requested to calculate PT. Okay, so we are requested to calculate PT. So first of all, Arom, you can see that I can find out angle PTS. So angle PTQ, sorry, it should be equals to 180 minus 97 minus 40. So what is the answer, bacha? Can you please tell me with the, yep, 43. दोबारा 53. बोले एक बच्चा. 43? सर 43. 53. It's 53. Okay, no, it's 43. Okay. 43 आ रहा है. Okay, it's 43. Thank you so much, Huria. So this is 53. So we have so much thingy available here. So we can use the sine rule. 43 सर. Okay, this is small q and this is small p. Not small p, sorry, it's small t.
सो हुरिया हमें स्मॉल q निकालना है, तो हम लिख सकते हैं q डिवाइडेड विद साइन q. It should be equals to t divided by sine t. Now you can see one thing that I have t available, I have sine t available, I have sine q available. I can find out q. So let's use sine rule now. So q is pt divided by sine q is sine 97. It should be equals to small t, which is 16.7, and sine t is sine 53. So pt is equals to 16.7 times sine 97 divided by sine 53. Now use your calculator. Tell me what is the final answer. It should go there. 20.75. 24 point 30. 24.30. सर ये So 53 नहीं है सर, ये साइन 43 है. सर क्वेश्चन ये 53 कहाँ से आ गया? yes. सर Thank मैंने you. 43 ही लिया है तो 24.3. अच्छा, तो मैंने गलत लिखा है खाली यहाँ पे, है ना? Yes, Okay, sir. 24.30 is the right answer. So till 3 decimal places, a significant figure, sorry. So it is 24.3, the final answer. Understood everybody or not? Yes or no? समझ आइए कि नहीं? Yes, sir. Understood. All right, proceeding. आगे चलते हैं जी. All right. Okay, this question is from the 402421 May June 2022. ठीक है? O levels वालों, आप लोगों के पास पेपर बुकलेट्स में टॉपिकल्स में होंगी ये चीजें. The diagram shows the position of three towns A and B and C. B is on a bearing of 072 from A. So this angle is 072. This is given in here that look at B from A is 072, means 072, 72 degrees. C is on a bearing of 150 from A. Okay. So this bearing is 150. So Arum, if this is 150, can I subtract 72 from it? Yep. Yes. Or no? So that would be 150 minus 72 would be 78. 78. Thank you. So Ramin, this angle is 78 degrees. I hope you copy. Yes, sir. Okay, find the bearing of A from C. Means look at A. Vadan, look at A from C. तो C पे north लगाना है वदान. ये north लगा दिया. Any problem? No, sir. So we have to look at A from C. So all I need is this beautiful angle, this one. Got it? So we know this already that we have to subtract it the little angle, and what that little angle is this little one. Agree? We have to subtract this little one. So we know this that this plus this would be equals to 180. So we know that already that 180 minus 150, 72 plus 78 is 150. That would be 30 degrees. So Hamza Amjad, this angle would be 30 degrees. So this blue bearing would be 360 minus 30. So the answer is 330. Understood, Ramin? Ji, sir. Yep. Okay. Then they say that in the next part, calculate BC. So where the hell is BC? So we can see one thing that BC is this line, which is the part of this triangle. So I have a lot of space here. So I can use this triangle here as an extraction. So Vadan A, B, and C is here. That's 300, agree? This is 280, and this angle is 78. Examiner is asking me to find out small a. Okay, so that's pretty clear that it's cosine rule for small a. So a square would be equals to 300 square plus 280 square minus 2 into 300 into 280 cos of 78, and small a means BC, which is equals to square root of the right side, 300 square plus 280 square minus 2 into 300 into 280 into cos 78. Can you tell me what is the answer for the BC? Square root of the right side. 365.3. Can you please repeat? 365.3. 365.3. So my final answer should be 365. 3 significant figure. Understood everybody or not? Yes or no? समझ आया बेटा सबको? Sir, understood, sir. Any problem, Alina?
No, sir. I hope my voice is clear. There is no problem in internet. Yes, sir. Yes, sir. Chalein, thank you so much. Okay, Ji. I hope the question is clear. This was for 5 marks in May, June 2022. Those who are having yearlies, they can open that. Okay. All right. They say that town D is 145 km from town B and angle ADB is 120 degrees. Find the two possible bearings of D from A. Okay. So first of all, they are saying this is part C of this question. Okay, let me make a link here now. Town D is 145 km from town B and angle ADB is AD and B is 120 degrees. So for example, this is 120 degrees. यहाँ पे मैं D लगा देता हूँ. A, D, and B. For example, this is 120 degree. Find the two possible values of bearing of D from A. Bearing of D from A. So that is D, for example. So this is, it doesn't look 120, by the way. Let me just make 120 degrees. It should be an obtuse angle like that. This is point D. So this is point D, and they say that town D is 145 km from town B. So from town B. So like let's say that this distance is 145 kilometers. Understood, Vadan? And angle Yes, sir. AD and B. Wait a minute, ये भी थोड़ा और ठीक करना पड़ेगा यार. ADB is AD and B is 120 degrees. तो मैं बस यहाँ पे लेट सपोज बनाते हैं यार, अभी ऐसे ही टाइम लगता है. AD and B, हाँ इस तरह बना सकते हैं. For सर example, ये this हम is तो कंपास को लगा के बनाएंगे ना. नहीं. You may add lines to this sketch to help you. Okay. ओके सर. So नहीं वो this is AD. करेक्ट एंगल कैसे लगाएंगे नहीं जैसे कोई यहाँ. जरूरत नहीं. करेक्ट एंगल ही हमने मार्किंग लेनी है. हमने ट्रिग्नोमेट्री के जरिए क्वेश्चन करना है. टाउन D is 145 kilometer from town B. So this is 145 kilometers and this is 120. Okay. What the examiner is saying? Examiner is saying find the two possible bearings of D from A. Bearing of D from A. So we know that this angle is given in the question, which is 72 degrees. This angle is 72 degrees. So they say that find two possible bearings of D from A. So it means that look at D from A. So A पे you have to draw north. It is already drawn in front of you. Agree or not? Yes or no? यस. Yes, sir. Okay. So first of all, I have to look at. तो मुझे D की तरफ देखना है. तो first of all, you can see one thing, that this is the clockwise moment. Agree or not? Yes or no? Yes, sir. This is यस. the clockwise thing. We can get that. So D from A. So इसका मतलब है कि हमें इसके साथ ये एंगल ऐड करना पड़ेगा. तो पहली बात तो ये पहले ये एंगल ऐड करते हैं. तो let's find out this little piece. So Ramin, this angle is 120. This is 300. This is A, that is B, and that is D, 145. And let's find out this angle, which is my small b. Agree or not? Yes, sir. Technically, angle A मुझे find out करना है, तो let's use sine rule. पर sine rule इस्तेमाल करते हैं. Sine A divided by 145. It should be equals to sine 120 divided by 300. So sine A is equals to 145 multiplied with sine 120 divided by 300. So A is equals to sine inverse of this thing 145 times sine 120 divided by 300. So angle A is equals to how much? So 24.74. 24.74 degree. So bearing one option would be 72 degree plus 24.7 degree. So this is 94.7 or not? So the bearing would be 94. 96.7, sir. 0.7. Yeah, 96. Okay. Thank you.
So this would be 96.7, which would be 096.7. Agree? 3 decimal places. Oh, sorry, bearing is a three figure digit. Understood? Okay. Find two possible bearings of D from A. Sir? हमें दो ढूंढनी है. Agree? Sir? Yep. Won't 96.7 be 3 digits? But 96.7 is not 3 digits. 96 is 2 digits. 0.7 is the decimal place. It's the Okay. 10th place. Okay. Okay. We do not call these places in math the digit. Okay. It's the 10th place. TENTH. Yes, sir. Second decimal is 100th. Okay. TH. Got it? Yes, sir. Got it, sir. Okay. Around this was the case number 1. We got one bearing here. But what if this 120 degree can be upwards as well? Agree or not? Agree, Aram? Aram, can you hear me, bacha? Ramin? Yes, sir. But this is north. I hope they copy all of you. That this angle is, for example, 72 degree. It was given in the question. And Vadan, this triangle can be upwards as well. Do you agree with me or not? Yes, exactly, sir. ये ऊपर भी जा सकता है. तो इसका मतलब है यहाँ पे एंगल फिर भी वही आएगा 24.7. Agree or not? तो यहाँ Yes, पे the second bearing would be Ramin this one. So 72 minus 24.7. Agree? Ramin, Yes, sir. समझ आ रहा है जी बेटा? सर. जी जी. बेरिंग का सेकंड आंसर हो सकता है सर नहीं, लेकिन एक मिनट, ये जो एंगल ए है ये 72 है ना? ये पूरा 72 है जी. अच्छा ये पूरा, अच्छा ओके. ये देखें ये डी उन्होंने क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा ना कि डी इस लाइन से नीचे है. ये इस लाइन से ऊपर भी तो जा सकता है ना. सर जो यप. खाली एंगल ए है वो 72 है और बेटा ये क्वेश्चन में गिवन था 72 की बेरिंग. याद है? जी ये गिवन थी हमें. ठीक है. इन्होंने कहा जी कि सर. फाइंड टू पॉसिबल. ओके. एंगल ADB इज 120. ADB 120. तो ये ADB ऊपर भी बन सकता है ना. सर वो तो बन सकता है, लेकिन फिर जो आप दूसरी पॉसिबल वैल्यू आप निकाल रहे हैं वो 72 माइनस करके निकाल रहे हैं ना 24.7. जी 72 में से 24.7 माइनस कर दूंगा तो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा ना. अच्छा हाँ. तो द आंसर वुड बी 72 माइनस 24.7. तो 72 में से 24.7 माइनस करो बच्चा. 47.3. 47.3. तो दिस वुड बी 047.3, 096.7. These two can be the answers. जी समझ आया बेटा सबको? yes, जी सर. sir. Agree or not? Any problem? No, sir. No, sir. All right, good job. Is sir's video off? Might Okay, connect. it's fine now. Actually मैंने कुछ कर दिया था गलती से. All Okay. right, can I proceed? Yes, sir. Proceeding. All right. Look at this question. This question is from October-November 2022, paper 2-2. So, Bismillahirrahmanirrahim. ABCD is a floor plan of an exhibition hall with the dimension shown in the meters. Calculate angle BCD. So, angle BCD is within this angle. Agree? So, I want to find out angle BCD, but I'm interested to find out BD first. Agree? And I can get the BD with the help of a Pythagorean theorem. So we know that BD should be equals to square root of 160 square plus 95 square. So what is the answer for BD? Anyone? Sure, 186.07. 186.0. बेटा यही आ रहा है 186.06.
0706 चलो एक ही बात है तो हम लिख देंगे 1 डेसिमल प्लेस तक 187.1. Any problem? No, sir. Okay, so this is 187.1. So now it's a cosine rule for C. Cosine rule banana hai. So we got the idea, Vadan, that this is small c, this is small b, and this is small d. तो स्मॉल c के लिए कोसाइन रूल बनाना है. सो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2bd cos ऑफ c. वदान वन गो में सब्जेक्ट मेकिंग कर रहा हूँ अभी. c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2bd इज इक्वल टू cos c. cos c का इनवर्स लेना है तो c इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ c स्क्वायर इज 187.1 square minus 165 square minus 107 square divided by minus 2 into 165 into 107. So what is the answer for this angle, bacha? 84.03. 84.03. So angle C is 84.0 till 1 decimal place. So 84.0 degree. 4 marks. So once I'm done, so I have to write that here, 84.0. ठीक है बेटा? Understood? Yes, sir. Okay. They say that part B, a light is attached to the ceiling vertically above B. Okay, vertically above B. Okay, like for example, there is a light here. Let me just make a light here. Okay, this is vertically above B, and that light is gonna make around 90 degrees angle with C and 90 degrees angle with A as well. Okay, this is vertically above. Okay, understood? So the angle of elevation of the light from C is 8.2. Okay, from C, the angle of elevation is 8.2. Agree? So calculate the angle of elevation of the light from A. So we are supposed to find out this angle from A. Okay? So first of all, Vadan, I know that this is a right angle triangle. This is light. This is 8.2 and this length. So this is a right angle triangle. Do you get the idea? So let me name that L here. That's the light. So BL is a light. B to L is a light. So Ramin, BL is a light and B to C is a horizontal line. Okay. And जी that sir. is the angle of elevation, which is 8.2. 8.2. And from C to B, the distance is 107. 107. Let's find out the height or the height of the light. So it is my perpendicular and that is base. So tangent theta will work. Tangent 8.2 is equals to perpendicular, which is my BL divided by 107. So BL is equals to 107 multiply with tangent 8.2. What is the length of the light here? What is the height of the light at which it is kept? 107 times tangent 8.2. 15.41. 15.41 is the answer for the height of at which the light is kept. So now that's the BL and A now. So BL is a triangle with a A now. Okay. So we got the idea here around that the BL is now 15.41. Agree? And that is point A. Examiner wants to find out the angle of elevation of the light from A. So we know that we have AB available. AB is 95. AB is 95. Side opposite to the angle is sine perpendicular. Agree? And this is base. So again, tangent theta will work. Agree? So A is equals to tangent inverse of perpendicular divided by base, which is 95. So tangent inverse of 15.41 divided by 95. So 9.20. 9.20. Very good. 9.20. So 9.2 is the final answer. यार आप में से किसी के पास मार्किंग स्कीम है तो साथ साथ चेक भी कर लो कि ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं. मुझे तो जहां तक लग रहा है हम बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं. बाकी तो Sir, do you have a marking scheme, sir, for this? Have you made one?
Can you please repeat? Sir, have you made a marking scheme for this? Yup. Can you send it, sir? Later on. Not yet. Okay. I'm solving it. I'm making a marking scheme for you. Don't you worry about that. You will get the Yes, sir. blank one and you will get the solved one. Okay. Yes, sir. And if you have any doubt, you can Google this paper, okay, and just see the marking scheme by yourself. सर ठीक है? Hmm. हाँ जी. सर एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पूछना था तो ये हम्म. एंगल ऑफ एलिवेशन कौन से वाला एंगल है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल द लाइट इज अटैच्ड टू द सीलिंग वर्टिकली अबव बी, तो लाइट जो है वो बी के ऊपर है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सी फ्रॉम द लाइट, इसका मतलब अगर आप सी पे खड़े हैं और अगर आपने लाइट को देखना है तो यू हैव टू मूव योर हेड 8.2 डिग्रीज अपवर्ड्स. एग्री और नॉट? यस सर इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन. देखो आप सब लोगों को मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ पे नजर आ रहा हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली नजर आ रहा हूँ, तो ये मेरा आई साइड विजन है. दिस इज 0 एंड 180 डिग्रीज एट द सेम टाइम, बिल्कुल पैरेलल. इफ आई वांट टू सी माय सीलिंग, अगर मुझे सीलिंग को देखना आई हैव टू मूव माय हेड अप, बट इफ समवन इज स्टैंडिंग अबव तो वो मुझे वहां से नीचे इस तरह दिखेगा. सो दैट एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन. इज दिस क्लियर? यस सर चलें, प्रोसीडिंग. Okay, question number 10, and this is from the paper 2 October November 2022 O levels. All right, question number 10. The bearing shows the position of the three towns P, Q, R. Q is on a bearing of 52. The Q is on a bearing of 52, means this is 52 degree. Okay, P, Q, and all is given. So calculate the bearing of R from Q. It means that look at R from Q. So draw north on Q. Okay, that is my north. So bearing is a clockwise angle and I have to look at R. So I need this angle. Okay. So now Ramin, we know that this angle can be found by subtracting 180 minus 52. Agree or not? जी सर 180 minus 52 is 0.28 128. Thank you. Yamna, if I have this angle तो 360 में से अगर ये दोनों एंगल माइनस कर लें तो हमारे पास ये बेरिंग आ जाएगी. एग्री और नॉट? यस सर तीनों साइड अवेलेबल हैं, कोसाइन रूल लगाना है स्मॉल क्यू के लिए, ठीक है. तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2p r cos ऑफ क्यू. तो अभी cos क्यू को सब्जेक्ट बना रहा हूँ यमुना, आई होप तुम्हें समझ आ जाती है. माइनस पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2p r. अलीना बेटा समझ आ रही है आपको कि नहीं? So Q is equals to cos inverse of Q square minus M square minus R square divided by minus 2PR. Now put the values for the examiner. Examiner के लिए values बिल्कुल आखिर में डालनी है, अच्छा क्या गलती ना हो, ठीक है. So cos inverse अब values डाल दो. Arum, use your calculator, okay. Small q is 17.2 square minus p square is 14.6 square minus 11.5 square divided by minus 2 into 14.6 into 11.5. यहाँ पे square है. So angle Q is equals to how much? 381.51 81. 0.51 81.5 is fine. So bearing is 360 minus 128. So bearing would be 360 minus 128 minus 81.5. So Vadan, what is the answer, beta? Three 60 minus 128 minus 81.5. जी मैं कह रहा हूँ मेरे कैलकुलेटर में कोई मसला आ गया है, कल नया लूंगा. So 150.5 150.5 50.5. Thank you everybody. So it's done. बेटा ले लें तो बेहतर है, अच्छा वैसे सर इसका आंसर गलत है. देखो ना जरा. 207.2 to 207.3. इसका आंसर क्या गलत हुआ? मैं स्क्रीन में दिखाती हूँ. देखो यार ये कोसाइन रूल सही अप्लाई किया है कि नहीं? जरा कोसाइन रूल देख लें सब प्लीज.
क्योंकि ये एंगल क्यू ही गलत हो सकता है, इसके अलावा नहीं। प्लीज कंफर्म दिस एंगल क्यू वंस अगेन। सर मैंने दोबारा किया लेकिन मेरा एंगल क्यू यही आ रहा है, पता नहीं। कोई और बच्चा करे। 17.2 square minus 14.6 square minus 11.5 square whole divided by minus 2 bracket 14.6 minus 11.5। यमुना कोई और कर रहा है कि नहीं यार? सर Sir, the answer या is 81.5. तो सेम आंसर Yes, sir. 81.5 एक मिनट बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू, तो हमने ये तो निकाला। खुशी सर यही आंसर है 81.5। जरा माइनस करें दोबारा, वो हमने क्या लिखा था 150.5। तो बेरिंग ऑफ आर, वैसे एक बात है रामीन, जी ये बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू जो है तो वो 150.5 ही लग सकती है, 202 नहीं हो सकता है, एग्री? जी सर, मैं भी ये देखने नहीं हो सकता क्योंकि हाँ, ये और तो वैसे 150 हो से लेस सकता हो, भी है क्योंकि 180 नॉट से टू लेस स्केल होगा लिखा ना। हुआ है। अभी खुशी ने हमें डाउट में डाला और खुद गायब हो गई। सर लेकिन एमएस में कुछ आंसर्स गलत भी तो होते हैं, ये हेलो पॉसिबल नहीं है 180 सर, से वो ज्यादा एक होना। मिनट, इंटरनेट का खुशी आ इशू गई था है। सर, मैंने क्वेश्चन ही गलत खोला हुआ है। सबर करिए। मफरीन है भाई, तुमने हमें कैलकुलेशन दोबारा दौड़ा दी बेटा। नहीं सर, मैंने खुद भी चेक किया था। असल में सर क्वेश्चन जो मैंने खोला वो बिल्कुल यही था, बट आखिर में ना मेरे वाले में एंड में ना वो ट्रायंगल बना हुआ है एक और, तो मैंने भी नोटिस किया। वो भी 10 है जो मैंने माशाल्लाह खोला हुआ है, माशाल्लाह वो भी क्वेश्चन नंबर 10 ही है और माशाल्लाह 2022 का ही माशाल्लाह है। माशाल्लाह। 2122 का ही है, बट वो पता नहीं। तो 2 1 2022 वाला क्वेश्चन इसके बाद वाला होगा शायद, ये है। ये सर जो मैंने खोला मैंने वो भी क्वेश्चन 10 ही है। ये 2 2 1 अक्टूबर नवंबर 22 है। ओ, मैंने 2 अक्टूबर नवंबर 21 खोला हुआ है, सॉरी। अच्छा शाह। अच्छा, A is a point on a horizontal ground. The angle of elevation of the top of the vertical mass from A is 68 degrees. Correct to the nearest degree. So nearest degree का मतलब है 1 degree error. तो 1 divided by 2 is 0.5. So it means that it would be 68.5 और lower bound हो जाएगा 67.5. The distance of the base of the mass from A is 45 minute correct to meter connect to the nearest meter. So 1 meter error. 1 by 2 is 0.5 meter. So it would be 45.5 and 44.5. बेटा एक नंबर है इसका, खाली अगर आपने ये वैल्यूज भी लिखे हैं तो 1 मार्क मिल जाएगा आपको, ठीक है? ओके, अब A is a point on a horizontal ground. तो A is a point on a horizontal ground. तो अब यहाँ पे हमें खुद बनाना पड़ेगा ऐसे। A is a point on a horizontal ground. Okay. The angle of elevation of the top of vertical mast from A is 68. Like for example, this is mast, vertical mast. And angle of elevation from A is 68 degrees. And the distance of the base of the mast from A is 45 degrees. This is 45 meters. Calculate the lower bound for the height. We are requested to find out this height, which is my perpendicular. Understood, Khushi? यस सर। So calculate the lower bound of the height. So we know that this is perpendicular and this is base. So we are going to use tangent theta. Around tangent theta is equals to perpendicular divided by base. Do you agree with me or not? But in this question, I'm finding perpendicular. Agree, Arom? Arom? सर वो मुझे भी उसका मैसेज आया कि मैं आपको बता दूं कि वो कह रही है कि उसके बैकग्राउंड में शोर बहुत है तो वो माइक नहीं ऑन कर सकती। अच्छा, उसको समझ पड़ गई है? जी अच्छा, so they are saying calculate the lower bound. अलीना बेटा जरा गौर करें, अपर बाउंड लोअर बाउंड आई होप आपने पढ़े होंगे। Calculate the lower bound of the height. बेटा if you want to find out the lower bound of the height, multiply वाला फॉर्मूला है खुशी, तो इनके भी लोअर होंगे। ओके, यस सर। तो बेटा बेस का लोअर हो जाएगा 44.5, वी रोटेड अबव, एग्री? एंड टेंजेंट थीटा का लोअर हो जाएगा 67.5। इज दिस क्लियर?
तो अब हाइट निकाल लें बेटा 44.5 मल्टीप्लाई विद टेंजेंट 67.5 Sir, 107.43. 107.43 0.43. तो हम लिख देंगे 107 आंसर में, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एग्री? जी मेरा बच्चा समझ आया सबको कि नहीं यार? जी सर। ऑलराइट। अच्छा जी, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 402421 October November 2022. Okay. The diagram shows a regular pentagon ABCD with the center O. AB is 6 and OA is D. Show that D is equals to 5.10. So we know that sine it's a regular pentagon. Agree? So sine it will have these triangles. Agree or not in the center? Agree or not? Agreed sir. Sine all of them they are equals to what? 360 or not? बिल्कुल। So 1, 2, 3 3, 4 5 4, 5. So 360 360 divided by divided by 5 is how 5 much? 60 72 degrees. Sorry. 360 divided सर by एक मिनट बेटा देख 72 लिया या मैंने, देख लिए बेटा. So सॉरी we got सॉरी the सर। idea that this is my triangle. This is small d, this is small d, this is 72, this is 6. So around this is obviously isosceles. So La Luna 180 minus 72 is 108. And 108 divided by 2 is 54 degrees each. So let's find out d now. So d divided by sine 54, it should be equals to 6 divided by sine 72. Yamna, sine 54 वहां पे चला जाएगा. 6 multiply with sine 54 divided by sine of 72. So small d is equals to what? Sir, 5.10. 5.10. 2 decimal place पे किया. जी. So the result is shown. We wanted to show that and it is shown. See, the question looked scary but it was very easy. मुश्किल लग रहा था लेकिन था बड़ा easy. जी 3 सर। marks थे. All right, it's a pyramid and 1 by 3 base area and times height. The formula for the volume of the pyramid is given. Okay, the regular pentagon ABCD from the base of the pyramid, the vertex F is vertically above O. Okay, so this is vertically above O. And the length of each slope of the edge of the pyramid is 14. Okay, so this length is 14. Calculate the volume of the pyramid. First of all, I need the height of the pyramid because height is missing. Height is missing. So we need to find out the height. So beta, we know that this would be a right angle triangle. Do you agree with me or not? A, O, and F. Agree, sign? जी A, सर O, agree। and F. F is missing. And AO is 5.10. We just found it in the previous part. Can you see that? AO. जी And सर। this is 14 given in the question. I'm interested in height. So use Pythagoras theorem. So H is equals to square root of 14 square minus 5.1 square. So H is equals to what? Sir, 13.03. दोबारा बताएं. 13.03. Okay, 13.03 is the height of the pyramid. Now we need base area. Now Sime, if you remember that the base area had 5 triangles. Can you remember that? This one? Yep 1, 2, 3, 4, 5. yep So 5 times area of triangle 1/2 multiply with product of two sides. So product of two sides is, for example, 5.1 and 5.1 multiply with sine 72. 5.1 multiply with 5.1 multiply with sine 72. That's the base area. So please tell me what is the answer, beta. A base area कितना आ गया? Sir, 60.62. 60.62. So the volume is 1/3 base area times height. So Khushi height is 13.03. So beta, what is the answer? बस final answer बता दें.
So 263.29. 263.29. 263.29. 0.29. So 263 is the final answer till three significant figure. Understood everybody or not? Yes or no? सर Yep. सर मेरा आंसर कुछ और आ रहा है क्या आ रहा है आंसर बेटा? सर बेस एरिया कुछ और आ रहा है बेस एरिया चेक करो ना. 5 multiply with 1 by 2 multiply with 5.1 multiply with 5.1 multiply with sin 72. 61.84 आ रहा है पता नहीं जरा कोई और बच्चा चेक कर ले बेटा. Sir, 61.84 है, sorry. कितना? 61.84 है, sorry. 51 point Sir, 61.84. 61.84. तो एक मिनट सबर करें. 61.84. तो ये करेक्ट कर लें बेटा. 61.84. अब वॉल्यूम बता दें. 68.59. व्हाट? 268.59 दोबारा बोलें यार. 268.59 ओके थैंक यू. सो 269 इज द आंसर. थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मुईद राउंड किया है. ठीक है ना. 8 के बाद 5 है. सो प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 9. A, B, and C are points on a horizontal ground. The bearing of B from A is 72. Look at B from A is 72. Okay. Now the bearing of C from A is 205. The bearing of C from A is 205. So this total is 205. So 205 minus 72. Laluna. 205 minus 72 is So 133. 133. Thank you so much. So this is 133. Calculate BC. So now beta BC is again cosine rule है बेटा. तो small a है ये. ठीक है यमुना. अब तो याद हो जाना चाहिए यार. Yes. A square is equals to B square plus C square minus 2BC cos of A. 50,000 दफा तो बना चुका हूँ. B square का मतलब है small b which is 95 square plus 170 square minus 2 into 95 into 170 into cos of 133. So small a का मतलब क्या है BC और BC की वैल्यू क्या आ गई बेटा कैलकुलेटर करके बता लें. 244.85 244.85. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. तो 245 लिखेंगे. हुरिया थ्री सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है. कहता है फाइंड द बेरिंग ऑफ A फ्रॉम C. मींस हुरिया लुक एट A फ्रॉम C. तो C पे नॉट लगाओ. C पे नॉट लगाया मैंने कुछ ऐसे. एग्री एग्री हुरिया. जी जी सर लुक एट A फ्रॉम C. तो यहाँ पे किसका मतलब है लुक एट A फ्रॉम C. सो हमने A को देखना है तो वी नीड दिस एंगल. हमें ये एंगल चाहिए क्लॉकवाइज. सो हुरिया वी नो दैट दिस टोटल एंगल इज 205. एग्री और नॉट? यप और नो? सो बेटा 360. आप ये भी कर सकते हो 72 33. वो भी 1 और 2 ही आता है. 205 ही आता है. ठीक है. माइनस 205. तो 360 minus 205 is 155. Rami. जी sir. This 155 angle is 155. So this angle would be 180 minus 155. So 360 minus 205 is 155. And then 180 minus 155, which is 25. So the answer would be 025. 3 digits. Arom, can you understand this thing or not? Laluna? यस तैयबा बेटा आपको समझ आई है बेटा? आप फर्स्ट टाइम हो तो बताओ जरा. जी सर All right. So proceeding, I think this is the second last question for today. All right, look at part C. They say that in this question, the point D lies on a horizontal ground due south of A. तो बेटा this is due south of A. This is due south of A. इसका मतलब है कि ये नॉर्थ भी है
और साउथ ऑफ ए का साउथ ए का जो साउथ है वो डी है, ठीक है, ये क्लियर कर लो अपने लिए, ठीक है। फिर देन वी हैव व्हाट, ड्यू साउथ ऑफ ए एंड ड्यू ईस्ट ऑफ सी, तो तभी यहाँ पे 90 डिग्रीज पहले से बना हुआ है। शो दैट ए डी इज 86.1, as I know that AD is the part of this right angle triangle. So Ramin, I'm going to pick this triangle outside, and this is triangle ACD. This is 95. Okay, the examiner is saying that show that A to D is 86.1. So AD is equals to, we need to find out this one. So we got the idea previously that this angle was given to me 205. So 205 minus 180, I can get the answer for this little part. So 205 minus 180 is 25 degree. So this angle would be 25 degree. Agree, Ramin? जी So सर। now beside the angle is base, and this is the hypotenuse. So cos theta will work. Cos 25 is equals to base AD, and the hypotenuse is 95. So AD is equals to 95 times, this is 95 times cos 25. So 95 times cos 25 is 86.1 सर। 86.1 meters shown. Okay, x is on the top. X is on the top of vertical mast at A. Okay, so जरा मैं यहाँ पे जरा थोड़ा सा इसको erase करता हूँ. X is at the top of vertical mast at A. At A के ऊपर एक vertical mast है. Let's suppose that A is, for example, this is X. Okay. The angle of elevation of X from B. Angle of elevation of X from B. Ramin, angle of elevation of X from B जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, और वो कितना है? 7 डिग्री। कितना है बेटा? 7 डिग्री। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक्स फ्रॉम डी। हमें एक्स फ्रॉम डी फाइंड करना है, तो वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द हाइट ऑफ द मास्ट। हमें हाइट ऑफ द मास्ट पहले फाइंड करनी है। तो ए एक्स बी, सो ए एक्स बी ट्राइंगल ए टू एक्स, एक्स ए एंड दैट इज बी। So AB is 170 and this is 7 degree. This is 7 degree. So this is height unknown, which is small b. Let's find out perpendicular. So usually angle of elevation और उसमें आपको हमेशा जो है ना वो tangent theta ही देखने को मिलेगा. So tangent 7 is equals to perpendicular AX divided by 170. So AX is equals to 170 into tangent 7. So what is the answer of AX? So 20.87. 20.87. 20.87. So यमुना 20.9 जो है ना बहुत छोटी लेंथ है। एग्री और नॉट? Yes. क्योंकि 170 मीटर अवे खड़ा है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं 170 मीटर अवे खड़ा हो जाऊं तो मुझे 20 पॉइंट समथिंग लेंथ बहुत छोटी नजर आएगी ना। एग्री? जी सर। इसीलिए एंगल कम है। एग्री? 7 डिग्री कोई एंगल ही नहीं, मतलब थोड़ी सी मामूली सी आइज अप की और आपको नजर आ गया। एग्री? Yes. तो ये हाइट ऑफ द मास्ट हो गया। अब वो कहता है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक्स फ्रॉम बी। एक्स फ्रॉम बी, हमें बी से फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ एक्स फ्रॉम डी, सॉरी, हमें डी से फाइंड करना है। तो वी हैव टू ड्रॉ ए एक्स एंड डी। तो ए डी इज द हॉरिजॉन्टल लाइन नाउ, ओके, एंड दिस इज माय एक्स। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ये फाइंड करना है। तो ये बा ए एक्स हमने निकाला है 20.9 और ए डी जो है बेटा वो हमें गिवन है, हमने निकाला है 86.1। एग्री? 86.1। तो तैयबा बेटा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अंडरस्टूड बच्चा? सो टेंजेंट इस्तेमाल हो सकता है। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 20.9 एंड द बेस इज 86.1। तो व्हाट इज द आंसर बेटा फॉर द थीटा? थीटा कितना आया? 13.64. एक बच्चा बोले 13.64. 13.64। एग्री? So 13.6 degrees is the answer, 1 decimal place. So this is last question for today, लेकिन टाइम अप हो गया तो प्लीज व्हाई नॉट ट्राई योरसेल्फ। आप एक क्वेश्चन जो है खुद ट्राई कर लें, ठीक है? तकरीबन 2022 और 2023 वाले जो 2022 का क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए थे
अच्छा ये तो पुराना, ये तो कल वाला काम है। 2022 वाले थे और आखिरी क्वेश्चन है आपके पास मई जून 2023 वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 एग्जाम सीरीज जो हैं वो हम लोगों ने ट्राई किए हैं अभी, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो गई है। कल हमारा इंशाल्लाह लास्ट डे है मेंसुरेशन का, और इंशाल्लाह फिर वेक्टर को मैं मंडे को इंशाल्लाह मैं वेक्टर्स स्टार्ट करूंगा। सो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें। अंडरस्टूड और नॉट? देखो आप लोग एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि Yes. एज अ टीचर माई जॉब इज टू शो यू दैट हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, एग्री, बट दिस इज योर जॉब टू डू योर प्रैक्टिस, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स दे टेक लेसन्स, दे वॉच videos, they take lessons, they take one-on-one tuitions from different teachers around, but they do not practice themselves. So that is the reason they stuck in exam. Because in exam you will see that, okay, this is a triangle, we used to see this triangle in our classes, in our school, in our, for example, in our tuition with our tuition teacher or something like that. But if you're not practicing, so you will struggle for sure. So this is my advice, please give your best. Understood? Yes, sir. Chale, thank you so much, take care, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह Allah हाफिज़ सर। Hafiz.